आगुरु हमें कोन करथिले ना गोटे वैल्यू स्टोर करिया पे हेले हमें गोटे मेमोरी एलोकेशन करू ओके माने पांचटा वैल्यू मते स्टोर करिया अछि पांचटा मेमोरी एलोकेशन करिया पड़ो तो आरे कहूची जे जदी हमें सेम टाइप रो वैल्यू टा स्टोर करिवा ताले हमें डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन करिवा दरकार नै हमें सेम मेमोरी एलोकेशन करिवा आ ता भितरे हमें सब वैल्यू स्टोर करिवा so that is the work of array array is saying that we have to store more than one element in a single memory location more than one element in a single memory location and more than one element in a single memory location and they having a same data type that data type भी एका हेथिबा दरकार so that is called as a array so array is called as the collection of data element which is used to store the data type in a adjacent memory location okay so I show you just a scenario just wait hello the problem किसी दिन से इंस्टॉल okay so you have to understand here
मु एटा डिस्क्राइब करछि एटा एक्चुअली कहला जे सपोज गोटे सिनारियो देखो जदि मु गोटे मते गोटे टैक्स दिया हला गोटे कॉलेज रु हमको पांचटा स्टूडेंट सिलेक्ट करिवार अछि जो माने गोटे क्विज कंपटीशन रे भाग ले तो से क्विज कंपटीशन में कोन हो पांचटा स्टूडेंट कर मते दिया हला नेम आउ रोल नंबर रखियो तो पांचटा स्टूडेंट कर जदि मु इंफॉर्मेशन स्टोर करबे नेम आउ एड्रेस दैट मींस I have to define 10 variable गोटे लोक पई जति मु दुईटा वेरिएबल डिफाइन करिवि तापरे हमर 10 टा लोक पई मते डिफाइन करबा को पड़ियो जो 5 टा लोक पई 10 टा वेरिएबल डिफाइन करबा को पड़ियो ओके तो इट्स सेइंग दैट यदि एई भलिया प्रॉब्लम होउची यदि मु सेमति 10 टा गोटे स्कूल पई 10 टा वेरिएबल हेले 10 टा स्कूल पे मते 100 टा वेरिएबल डिफाइन करे नाउ आरे कहला जे मते एई 10 टा वेरिएबल डिफाइन करबा दरकार नहीं तो यू हैव टू डिफाइन द सिंगल वेरिएबल हमें गोटे छोटो वेरिएबल टा डिफाइन करबा ता भीतर हमें सब वैल्यू स्टोर करियो सो देयर इज नो नीड टू डिफाइन मोर देन वन वेरिएबल you have to store only one variable गोटे वेरिएबल डिफाइन करियो ता भीतर हमें सब वैल्यू स्टोर करियो तो array is a collection of element of a single data type is a collection of element of single data type which is used okay so array is a element of single data type that is used to store in a adjacent memory location. An array element can be accessed by specifying the name and subscript number of the array. Okay, तो आज तक हमें array रे वैल्यू स्टोर करबा कोटे लोकेशन हमें स्टोर करूचे तो एलिमेंट गुडा को कोडी स्टोर होबो ना सबस्क्रिप्ट नंबर रे स्टोर होबो तो ये गोटे सबस्क्रिप्ट नंबर हला 0 एटी 1 रहिला एटी 2 रहिला एटी 3 रहिला एटा 4 रहिला एटा होचे तार सबस्क्रिप्ट नंबर ओके कारण गोटे लोकेशन में जदी मल्टीपल वैल्यू हमें स्टोर करिवा तमे कंफ्यूजन हे जिवा जे को जगह रे हमें को वैल्यू टा स्टोर करू सेति पे हमें गोटे आइडेंटिफायर बा इंडेक्स नंबर दे तो array रो इंडेक्स नंबर 0 रो स्टार्ट ला सो 0 1 2 3 4 so an array is a collection of element of a single data type stored in a adjacent memory location. An array element can be accessed by specifying the name and subscript number of the array. The subscript number specifies the position of an array element within an array. माने गोटे array element टा को जगह रे स्टोर करियो सबस्क्रिप्ट नंबर डिफाइन करियो. This is also called as the index of the array. हमें आपको इंडेक्स बोली करियो. तो array index जोटा स्टार्ट होची एटा 0 रो स्टार्ट होची 0 1 2 3 4 तो array index number is starting from this 0 1 2 3 4 ओके बुझी पाइलो ना बुझी होला नहीं गिरिजा पंचो हेलो हेलो पंचो ये बुझी पाइले एटा समस्त बुझी पाइलो हेलो हेलो मो कथा सुबुची हेलो
Okay. So your array is of two type. One is one dimensional array, another is multi-dimensional array. The array is two type. One is single dimension array, another is multi-dimension array. Single dimension array is what? Now array that we have in single dimension array, it is a single dimension array. Means it is a single row, multiple column. Single row, multiple column is a single dimension array. Okay, single row and multiple column, it is a single dimension array. Array element can be accessed by its subscript number or array number. So this is 0, 1, 2, 3, 4 is called as the subscript number or called as the array index number. Okay, so array index number is starting from 0. Array index number is always starting from 0. So depending upon this, your array is of two type. One is single dimension array, another is multi-dimension array. Single dimension array contains single row and multiple column. Multi-dimension array contains multiple row and multiple column. So now I define here. See there. This is a single dimension array. Okay, it is a single dimension array. Okay, and in multi-dimension array, it contain multiple row and multiple column. These are multiple row and multiple column. It is represented as index number. Zero, one, is two index, is three index, is four index. So it is the index number. A similar way is 0, 1, this is 2, this position is 3, this position is 4. Now it is 0 index, it is 1 index. 0, 0, this position is called the 0, 0. This position is called the 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4,
05, 06, 07. Sorry, this one is the what? Just give a wrong thing. Okay, it is a 110. Okay, so ignore the first one. Mouse pad. This is 0, 1. Sorry, this is 1, 0. This is 1, 1. This position is called as the 1, 2. One, 3. This is 1, 4. This is called as the array index number. Okay, it is a single dimension array, it is a multi-dimension array. बुझेला? गिरिजा उपांशु की बुझवाले? Again. And how you have to define an array? For defining a array element, we have to use so for defining a array in int a equals to new int, then you have to give a size.
int a is equals to new int, then array, then we have to give a size. Okay, so another way, at the time of declaration, we have to initialize the value. 10, 20, 30, or you can define here another way, int a equals to new int 20, 30, 40, 50. It is a way of declaring an array and we have to initialize the value. Okay. So write it. Excel. Hello. I can. So now I am showing you a simple program of array.
Okay, so it is a first program of array. Here we define an array int x new int 10, 20, 30 and 40. Int sum is equals to 0. Int I is equals to 0. 0 less than x dot length. Length माने कौन ना length is a attribute to get the size of the array. Array रो size को आनिया पे हमें length use कर ले. तो it is system dot println 10 तो प्रथम एटी 10 शो करिवो 0 इंडेक्स रे. सम रे केते अछि ना 0 तो 0 plus 10 हे गला 10. पुनी I रो वैल्यू इंक्रीमेंट ला 1. 1 less than 4 condition is true. तो अगेन मते शो कला केते 20 शो करिवो तो 10 plus 20 हे गला 30. एटी हमरा 30 हे गला. I रो वैल्यू इंक्रीमेंट ला 2. 2 is less than 4 condition is true. तो एटी 30 शो कला तो 30 plus 30 हे गला 60. तो 2 रो वैल्यू इंक्रीमेंट ला 3. 3 is less than 4 condition is true. x array 3 index array ला 40 एटा गला 100. एटा पुनी इंक्रीमेंट ला 4. 4 is less than 4 condition is false. एटी मते सब एलिमेंट एटी शो कला. ओके ओके एटा मु पठे देबे प्रोग्राम टा. ओके नेक्स्ट क्लास आ पड़ी.